Hello everyone. I hope you're doing well, you are fit and fine. And sorry for the delayed videos, guys. There was some problem happened with my laptop, so I have to give it to repair. I took a laptop from my friend. I'm making this video, so sorry for the delay. But yeah, we have to maintain the consistency. You have to maintain the consistency, and let's try to solve this problem. It's amazing problem. Interesting. It's not a medium problem. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लीड कोड से, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी काफ़ी सारी धुरंधरों से भी गलतियाँ हो जाती है, तो लीड कोड तो क्या है, राइट? लीड कोड काफ़ी खतरनाक है, बट या कभी कभी हो जाती है गलतियाँ. So it's actually a medium hard question. The code and implementation part is easy, but the thought process is difficult. It's a hard problem in thinking process. It's easy to implement, you can say easy to medium to implement, but hard to think about it. Okay, yaar. Let's try to read the problem. You have an n-sided polygon where each vertex has an integer value. You're given an integer array value where values of I is the value of the ith column. Okay, तो अपने पास एक polygon है, and then there are vertices and there are some values. Fine. Polygon triangulation is a process where you divide a polygon into a set of triangles, and the vertices of each triangle must also be vertices of original polygon. Okay, so what we have to do, we have to triangulate, mean we have to divide the polygon into some triangles. Okay, that no other shapes other than triangle are allowed in division. This process will result in n minus 2 triangles. ये क्या बोल रहा है यार, ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया यार. सही, हम थोड़ा सा आसान शब्द में बताओ. It's trying to say is that let's say to divide the triangle like this, you can divide like this, you can, but ऐसा नहीं होना चाहिए, overlapping type नहीं होना चाहिए. You try to divide the triangle like this. Okay, you cannot divide a triangle like this. This is not allowed. This is a triangle, this is also a triangle. No, they should be separate about, there should not be overlapping things, right? ठीक है यार, ये हमको समझ में आता है. And there will be n minus 2 triangles always. If you try to think about it, there will be always n minus 2 triangles. एक और triangle रह गया, sorry. Yeah, so there will be n minus 2 triangles. N is the side, a number of degrees, or something as sides in the polygon. And okay, return the minimum possible score that you can achieve with some triangulation. What we have to do, what is the cost is the triangle coordinates products. Like this is, let's say, v1, let's say v2 and v3. So if you make a triangle, the product is, cost is v1, v2, v3, and we have to sum over all these vi, vj, vk over all the triangles, and we have to minimize that. Okay, after reading this problem and thinking about medium, obviously we don't know that this is a good problem. What we think about our intuition one is, Sayyam, it is very simple. But firstly, after seeing the problem, right, and we see the n50, actually this is a scary thing if you think about it. Ki if n was 1000, that will give you a good confidence. Okay, that will be a very easy problem. But if n is 50, that means O of n cube is also a particular solution is possible. Then you will result in a dilemma. Oh, I'm doing something wrong or not? Because see, now there is a choice of a greedy idea and a all problem idea, like a DP idea. That कि यार सारे possible situations को explore करना है, या क्या एक greedy idea work कर जाएगा. That's a dilemma, and N50 gives that dilemma. That's an intuition. But कोई बात नहीं. The first intuition that come to my mind was a greedy idea. That what you do, you pick a coordinate. Let's say you pick a coordinate. I hope this also, मुझे ऐसा लगता है, like most of us think about the same direction. You fix a coordinate and let's try to make the triangles. This is a triangle, this is a triangle, this is a triangle. This is one way of making a triangle, fixing a coordinate. Let's keep changing the coordinates. So you fix this coordinates, now you're making a triangle, making a triangle, making a triangle, right? And these this is actually, yeah, this one. So yeah, making a triangle and all the possible ways. And then this, the complexity reaches is n square. I thought this was a good solution, but it was wrong. Why? We are missing out some cases in this thing. Why it is wrong is, if you think about that, you're missing these kind of cases. Try to think about this. We are not covering this kind of cases. Okay, कुछ पर्टिकुलर केसेस हम कवर कर रहे हैं, एंड यार तो काफी गड़बड़ हो रहा है. टेक्निकली वी हैव टू कवर ऑल द पॉसिबल ways of triangulation and take a minimum over that. That's the complete idea. There is no greedy idea associated with that. After seeing this example, there are lot of cases we are missing. अच्छा यार, ठीक है. Now what we have to do, what is the freedom we have? We have n cube or n power 4 also you can go up to, but n cube is the thing we have to think about. Okay यार, n cube तक भी जा सकते हैं, ठीक है. तो अब क्या करें, मैंने एक कोऑर्डिनेट फिक्स करके देखा. लेट्स ट्राई टू फिक्स टू कोऑर्डिनेट्स. क्या टू कोऑर्डिनेट से फिक्स करके कुछ होता है क्या? देन दैट इंट्यूशन कम्स टू माय माइंड इज, अरे यार ये कुछ कुछ इंटरेस्टिंग है. आई नो इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट यू विल थिंक अबाउट लाइक दिस. अच्छा यार, दो कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो आएंगे, ठीक है यार. अगर मैं इसको इसको फिक्स कर लूँ, एक बार को फिक्स कर लूँ,
तो अब मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ मैं देखो, ये बताओ कि ये तो ट्राइंगल बनेगा ही, ये जो है एक ट्राइंगल तो बनेगा, ठीक है यार। अब लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट दैट यार, यहाँ से और यहाँ से ना एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ से अपन एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, यहाँ से एक ट्राइंगल बनाया, एक पॉसिबिलिटी हो गई, फिर बचा हुआ ये कुछ प्रॉब्लम हो गया। इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, एंड अगर अपन कुछ इस तरीके से देखें, सेम चीज को अपन करके देखें, अगर अपन इसको चेंज करें, मतलब एक दो पॉइंट को फिक्स करके अगर अपन बाकी प्रॉब्लम को चेंज करते रहें कंप्लीटली, तो प्रॉब्लम्स जो है वो डिवाइड हो रही हैं। इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट दिस, तो हाँ यार, कुछ तो प्रॉब्लम जो है वो चेंज हो रही हैं। द प्रॉब्लम्स आर बीइंग चेंज्ड। दिस इज लेट्स से आई, लेट्स से दिस इज जे, दिस इज आई, दिस इज जे। Try to observe some things here. Acha, you're fixing two and then you're varying a k and you are dividing something into some सब प्रॉब्लम्स। अरे यार, क्योंकि अगर अपन किसी तरीके से लेट्स से ये बताओ कि तीन को सॉल्व करने का तो अपन को आता ही है तरीका, राइट? देयर इज अ बेस केस दैट ओनली थ्री कोऑर्डिनेट्स आर देयर, तो उसका बस तीनों का प्रोडक्ट रिटर्न कर दो, ओनली वन ट्रायंगल, इट्स लाइक जे सॉरी, एंड यू कैन मेक अ के हियर एज वेल। ठीक है यार, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया यार। ठीक है यार। अब ना जो सब प्रॉब्लम है वो किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। ओके यार, अभी अपना सब प्रॉब्लम ये था, यहाँ पे अपना के था, अब यहाँ अपना के आ गया, यहाँ अपना के आ गया। इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, इफ यू फिक्स टू कोऑर्डिनेट्स एंड देन यू मूव योर के, then you are actually dividing your parts into some problems and then you're merging all the problem solution, because we have to calculate these are all disjoint also, टेक द कंसिडरेशन दैट। सो अगर तुम देखो तो एक सब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आया यार, यहाँ से यहाँ काटा, एक के से जे एक सब प्रॉब्लम आया, ये वाला सब प्रॉब्लम आया, एक आई से के एक सब प्रॉब्लम आया। आई से के में कुछ है क्या? अब बताओ, ये बताओ, दो से लेस कोऑर्डिनेट्स हुए तो कोई ट्रायंगल बन सकता है क्या? यार ट्रायंगल ही नहीं बन सकता, तो वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट्स हैं तो ठीक है यार, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, वी मेक अ ट्रायंगल एंड वी डिवाइडेड द होल प्रॉब्लम इनटू टू पार्ट्स, the I से K वाला part and K to J वाला part. Try to think and try to recall what you have solved these kind of problem. Yes, try to think about that. It's a MCM DP pattern, right? What you're trying to do, you're trying to take a partition and trying to divide the into two sub problems. And why we have thought about that? Because see, triangle है, एक कोऑर्डिनेट फिक्स करके देखा, ग्रेडी आइडिया करके देखा, नहीं वर्क किया क्योंकि ऑल पॉसिबल केसेस नहीं कवर हो रहे थे। देन वी ट्राई टू थिंक, लेट्स ट्राई टू फिक्स टू कोऑर्डिनेट्स एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड वी थिंक ओह, this is interesting. We fix two coordinates and we are trying to moving the third coordinates, we are actually, this is another problem, this is another problem. So if you try to think about that, अगर यहाँ पे अपन प्रॉब्लम्स को देखें तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक प्रॉब्लम अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और दिस प्रॉब्लम इज अनदर प्रॉब्लम। अब ये एक बड़ा पॉलीगॉन है, इसको फिर से अपन, तो रिकर्जन शुड कम्स टू योर माइंड, रिकर्जन शुड कम्स टू योर माइंड। Sayam, we are able to understand that. Oh. So if you try to think about that, it's like that. You're solving a problem from where to where. See, try to understand. We are trying to solve the problem from zero to n minus. Let's say if you are at zero, index. If you are saying the last side, if you're trying to calculate the vertex, if you try to think about that, so if you try to think about this, so you are trying to fix these two coordinates, and then what you're trying to do, you move your k and try to minimize over the all the case. So what you're gonna do is solve of I of n. What will be that? What you gonna do is actually, if you try to think about it, this is the final sub problem we want to solve. But our recursion, what you can say is solve of I of j is actually what, minimum of whatever we got until till now. Let's say we are moving 1e9 we make, and then what we are doing, we are moving for all case, for all k between I and j. We're trying to move between all k because we want to make a partition, want to make a triangle, and then we are doing is answer comma, what is our answer, sub problems divided, our sub problem was divided from I to J. Try to understand that I will be included in this, क्योंकि इसमें ट्राइंगल में I included होगा, right? I to J, I to K सॉरी, प्लस सॉल्व ऑफ अब K to J to K, और जो ट्राइंगल अभी अपन ने डिवाइड किया प्लस, अब उसका क्या कॉस्ट है, उसका कॉस्ट है वट एवर इज द वैल्यू, वट एवर इज I, and let's say multiply by values J,
मल्टीप्लाई बाय के। तो हमने एक्चुअली किया क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट्स इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड इट्स नॉट वेरी इजी टू थिंक अबाउट दैट. What we are doing is we are fixing two coordinates and we are trying to find the third coordinates and we are trying to minimize. यार क्योंकि वो दो के बीच में ट्रायंगल तो बनेगा ही, ट्रायंगल तो बनेगा. वी आर ऑल पॉसिबिलिटीज अपन ट्राई टू एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपन. एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग द ओवरऑल मिनिमम. ठीक है, वी आर अप्लाइंग द सेम लॉजिक हियर. इस पे भी अपन सेम लॉजिक लगाएंगे, इस पे भी अपन सेम लॉजिक लगाएंगे एंड वी आर कंबाइनिंग दैट लॉजिक. यहाँ से कुछ मिनिमम मिलेगा, यहाँ से कुछ मिनिमम मिलेगा और इसका कुछ आंसर होगा, फिर अपन टोटल का माइनस मतलब मिनिमम लेके सम कर लेंगे. और अपन सम तो कर ही रहे हैं, यहाँ से आई से के से जो मिला, जे से के मिला और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो अगर अपन इसका एग्जाम्पल फिर से और थोड़ा देखें अच्छे से तो इसको अपन और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, विद एन एग्जाम्पल वी कैन थिंक अबाउट दिस. So let's say why we are starting from 0 to n minus 1, that's also very very important because we are in that case we are considering all the partition. अगर तुम कहीं और से चालू कर दोगे यहाँ से so तो partition सारा मिल नहीं पाएगा, right? तो let's say we started from this is 0, this is 1. 0 बेस कर लेते हैं क्योंकि यार इंडेक्सिंग 0 बेस रहती है. 0 to 5 हो गया तो अपन 0 to 5 सॉल्व कर रहे हैं. इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं यार. वैल्यूज क्या क्या है? इसकी वैल्यू 1 है, 3 है, 1 है, 4 है, 1 है, 5 है. ठीक है, तो अपन ने अब यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने की कोशिश की है. तो पहला पार्टीशन क्या हो गया? पहला पार्टीशन हो गया ये हो गया. ठीक है, ये पार्टीशन हो गया. तो अपना एक ट्रायंगल मिल गया 5, 5 इंटू 2 इंटू 1 प्लस. अब देखो यहाँ से यहाँ कुछ है क्या? कुछ है ही नहीं. दिस इज आवर आई, दिस इज आवर जे, दिस वी हैव टू सॉल्व नाउ. यहाँ से यहाँ तो कुछ तो है ही नहीं, ट्रायंगल बचा हुआ ये. तो ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा अपन को. सॉल्व ऑफ कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5 तक. इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, इसमें मिनिमम फाइंड करना. दिस इज अ रिकर्सिव वे, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू, we'll try to find the minimum from solve of. We'll try to find out all the possible ways to divide this problem now, and we have to divide with this problem now because we are now again finding the k. We'll again now this is reduced to this sub problem. This is our new polygon. You can say this is a pentagon. You try to think about this, right? This is like 2, 3, 1, 4, 5. Now again this is our 0, this is our n minus 1 type of thing. Try to think about that. This is actually I and this is actually j. We're trying to partitioning this because this is our becomes our I, this our becomes our j, right? And now what we are trying to do, again we are trying to partitioning this, then we are trying to partitioning this, then again if we do this, again what we are doing is we're trying to partitionate this and the remaining problem. And this is, if we contributed this, then we are trying to find the answer for this. This is a 4-dimensional, right? So what we are doing essentially is this finally gives solve of I o comma j. What will it give? Gives the minimum triangulation cost that we are trying to achieve, right? पूरा हम अचीव करने की कोशिश करें, देन वी फाइनली एड इट अप, राइट? आई होप यू गॉट द इंट्यूशन बिकॉज काफी बड़ा हो जाएगा ड्रॉ करने में. आई एम नॉट मेकिंग इट too much complicated, but I think you got the idea what we're trying to. We are just fixing two coordinates, we are moving the k and we're dividing into two problems, right? Now they are completely same problem which you're trying to solve, right? This is just a smaller problem and that is the case. Let's try to see the code. It's very simple, it's not very difficult. What we are doing is we are starting with 0 to n minus 1, our overall polygon. And then what we are doing is we're dividing the polygon into some parts from, let's say we're fixing I and let's say we are fixing j, and then we are moving this I and moving this j, right? I to k, this is a problem, right? There's a k here. Let's say you divide the problem into this part, this is a problem, another problem we have to solve, this is the another problem we have to solve, and this problem we already solved. Ijk is making a triangle, so we are making Ijk as a triangle. We are included that answer, and finally answer from left side, answer from right side, and they are summing it up, taking the minimum and taking the return the minimum, right? So we define the mini, and then what we are doing is we are taking a mini answer from this problem, and then we are solving this, we are solving this, and this is an entire another sub problem we're trying to solve, and we're trying to return the mini, and we're trying to memorize it, right? I and j is there, two states, I and j are there, two states, another loop is there. That's why the complexity become n into n into n. Why the loop also can go up to maximum of n, you can say order of, and that's why it's give us O of n cube solution. So it's a beautiful problem. It's MCM DP problem. I will also link that in the description that you can read about that what is MCM DP. This is a partition DP. It's a standard problem. It's just a variation. You have to think about that. It's an interesting problem. Take it as a learning problem. And yes,
And I hope you like the video, and also do check it out with the OOP series which I have recently started. If you're till the end, and make sure to subscribe to the channel and like the video, and see you in the next video. Bye bye.